friends, CMA friends. So one of your subject which is on audit, which predominantly talks about cost audit and management audit, internal audit, operational audit, and internal controls, right? So yes, it is theoretical, but let me tell you something. The expectation of the institute, any professional institute, so it may be a cost accounting or it may be a chartered accountant, it would be at highest level in this subject. Because to be very frank, this is the most practical subject. In what sense I am talking about is this is what you are going to perform. So I have created a special video which talks about what is a statutory audit, which is normal audit of financial statement. You guys are aware of what is cost audit, what is management audit, operational audit, and internal audit. And let me tell you, for cost accounting professional, this is most critical in your practical life as well. So sir, what we should do when we look into book, like even we are going through that, I'm just giving you overview. It is all theory. So do we need to read? Yes. Do we need to by heart? Absolutely no. By hearting करोगे तो पागल हो जाओगे. But आपको at the same time ये novel के जैसे read करना है. और back of the mind में आपको उसका structure याद रखना है. So when we will learn concepts, तो एक चीज क्या होगा कि आप लोग आंसर में कोई irrelevant चीज नहीं लिखोगे. Because when you are writing about any case study or any question which is on management audit, when you know crux of management audit, when you know what are expected out of management audit, तो तुम लोग वहाँ पे गलती से statutory cost audit का concept नहीं लिखोगे. तो वो आपको properly समझना है. Okay, so as you know, what is now new nomenclature is CMA, cost and management accountants. So your role is more into management. So I would say your role is more into business. You guys are contributor to business. Your advices, your recommendations, everything has loads of value. Now when you give any kind of suggestion, for that you need to know what are the root causes, and those root causes identification के लिए there are different types of audits apart from normal cost audit, which we call management audit, which is management का audit, operational efficiencies etc. and traditionally जो चलते आ रहा है with some modern methodologies, internal audit. Okay, तो एक बार just आपका मॉडल देखते हैं. So I'll just share that screen. So as per your model, cost audit is for 35%, which is yes, very, very critical. Management audit is for 15%. Internal, operational and related issues are nothing but internal controls. Those are for 25%. And case studies on performance analysis. Let me tell you, case studies is using knowledge of above all things. So परफॉर्मेंस एनालिसिस में क्या देगा आपको? फाइनेंशियल्स देगा, कोई की फैक्टर्स देगा, और तुम लोग को कॉमन सेंस एज अ बिजनेसमैन व्हाट यू वुड हैव डन वो आपको यहाँ पे करना है. ठीक है, सो लेट्स एक बार गो थ्रू करते हैं कि आप लोग कैसे अप्रोच करोगे. ओके, सो इन केस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट आपको याद रखना है, आप लोग का ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट हुआ करता था कॉमर्स वगैरह, जिसमें आप लोग हेनरी फॉयल अलग अलग रूल्स पढ़ते थे. डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, यूनिटी ऑफ कमांड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथराइजेशन, वो सब चीजें. मतलब यहाँ पे यू आर गोइंग इनटू शूज ऑफ मैनेजमेंट, और वो आपको दिमाग में रख के आपको ऑडिट करना है. नाउ व्हेन आई से मैनेजमेंट ऑडिट, मतलब जो आपका नेक्स्ट वीडियो है आपको उसमें डिटेल में समझेगा. बट एक चीज याद रखो, यू आर डूइंग ऑडिट of management.
तो ये आपका जनरल डेटा का ऑडिट नहीं होगा, ये एक एक लेवल पे होगा। तो एग्जाम में दे विल गिव एनी केस स्टडीज, एक हम लोग एग्जॉस्टिव केस स्टडी भी करने वाले हैं, बट दे कैन गिव एनी फंक्शन, और वो एक फंक्शन का आपको प्रॉब्लम्स बताएंगे कि ये हम लोग को प्रॉब्लम्स आ रहा है, आपको रूट कॉजेस आइडेंटिफाई करना है एज अ मैनेजमेंट ऑडिटर, और आपको सजेशन देना है। So there can be n number of function, and when I saw your book, I was amazed. This book can be written for longer time, not only for exam purpose. क्योंकि इसके अंदर इतना अच्छा अच्छा डिटेल दिया हुआ है, बाय हार्ट मत करो, मजे से पढ़ोगे तो फटाफट पढ़ के होगा और कंसेप्ट भी आपको समझेगा। यहाँ पे बहुत सारा चीजें, एनर्जी कैसे बचाना है, कैपेसिटी कैसे यूटिलाइज करना है, मैन पावर एनालिसिस कैसे करना है, वगैरह वगैरह, बहुत अच्छा चीजें दिया हुआ है यहाँ पे। अभी ये पढ़ने के टाइम कैसे पढ़ोगे, उसके लिए आपको पहला समझना पड़ेगा what are the concepts of management audit. So guys, don't consider this theory and leave it. Okay, so first आपको अभी next video देखना है which is on management audit, internal audit, also on operational audit. Okay, वो देखना है। उसके बाद में आपको यहाँ का टॉपिक्स में रीड करना है। Then I will give you one separate video which is on internal control, internal check and internal audit. वो क्या पार्ट है वो भी एक वीडियो में आपको अलग से दूंगा। वैसे ये जो नेक्स्ट वीडियो में है इंटरनल ऑडिट तो आ ही जाएगा, एंड दैट वीडियो आई हैव मेड फॉर मेनी प्रोफेशनल्स व्हिच इज इंक्लूडिंग फाइनल सीए, क्योंकि सभी प्रोफेशंस में आजकल डिमांडिंग है मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट। ओके, सो गो थ्रू दैट वीडियो, after that read this stuff, okay, and also I will have a separate thing on internal control. Okay, तो वो एक हम लोग गो थ्रू करेंगे। तो आपको उसके बाद में पढ़ना है इस वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ ऑन मैनेजमेंट ऑडिट।